Respiration in plants. What is respiration? Breathing, inspiration plus expiration. Respiration, oxidation of food for release of energy. Respiration, oxidation of food for release of energy. Oxidation of food for release of energy. Oxidation of food for release of energy. Oxidation food. Oxidation of food. Oxidation of food for release of energy. Oxidation of food for release of energy. This is H12 and 6 for SCO2. What is respiration? Breathing, inspiration plus expiration. Inspiration plus expiration. Inspiration, oxidation of food for release of energy. Oxidation of food for release of energy. We have to plant breathe. Plant also need oxygen. 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 Parenchymatous cells can provide mechanical support. Loose stomata, loose parench. ऑक्सीजन क्या है? स्टोमेटा लेंटिसल्स. स्टोमेटा लेंटिसल्स होते हैं जो एवरी प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस नीड. एवरी प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस नीड्स. एवरी प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस नीड्स. Every plant part take care of its own gaseous needs. Every plant part take care of its own gaseous needs. Energy required low. Oxygen made via photosynthesis. Oxygen made via photosynthetically. Oxygen made via photosynthetically. Oxygen made via photosynthetically. Stomata lenticels. Every plant part take care of its own gaseous exchange. Every plant part take care of its own gaseous needs. Energy requirement is low. Oxygen made via photosynthesis. Respiration is catabolic. Respiration is catabolic process. 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 Respiration is catabolic में exoorganic chemistry गलती है. Respiration is catabolic. Respiration is catabolic होते हैं. Respiration is catabolic होते हैं exoorganic. कैटाबॉलिक प्रोसेस है. कैटाबॉलिक प्रोसेस और एम्फीबॉलिक पाथवे है. एम्फीबॉलिक पाथवे है और क्या कहते हैं? एम्फीबॉलिक पाथवे है. एम्फीबॉलिक पाथवे है. कैटाबॉलिक प्रोसेस है. Respiration is catabolic, exoorganic, multi-step enzymatic, which organic food oxidize completely, enzymatic, which organic food oxidize completely होगा तो CO2 H2 निकलेगा. completely होगा CO2 H2 निकलेगा. completely होगा तो CO2 H2 निकलेगा. completely होगा CO2 H2 निकलेगा. incompletely होगा तो CO2 इथेनॉल या CO2 बनेगा. इथेनॉल या इनकम्प्लीट इथेनॉल या CO2 बनेगा. in presence or absence of oxygen. in presence or absence of oxygen. 56 किलो कैलोरी से 56 कैलोरी. This molecule can be used to synthesize some other molecules. बन जाएगा. ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है. ये कम्प्लीट ऑक्सीडेशन तो कुछ और बन जाएगी. कार्बन से कार्बन बॉन्ड स्टोर एनर्जी. कार्बन बॉन्ड स्टोर एनर्जी. कार्बन बॉन्ड स्टोर एनर्जी. Everyone wants energy for movement, transport, respiration. Everyone wants energy for movement, transport, respiration, reproduction, etc.
circulation, reproduction, etc. Respiration is done in many small steps. Respiration is done by in Respiration is done in many small steps. It can be coupled with ATP formation. Respiration is done in many small steps. It can be coupled with ATP formation. It can be coupled with ATP formation. Respiration is done in many small steps. Respiration is done in many small steps. Everyone wants energy for movement, transport, inspiration, or reproduction. Respiration is done in many small steps. Respiration is done in many small steps. It can be coupled with ATP. It can be coupled with ATP formation. It can be coupled with ATP formation. It can be coupled with ATP formation. It can be coupled in ATP formation. Not all energy is released in single go. Not all energy is released in single go. Not all energy is released in single go to prevent heat loss. Not all energy is released in single go to prevent heat loss. Not all energy is released in single go to prevent heat loss. The carbon store energy. Carbon bond store energy. Everyone wants energy for movement, transport, inspiration, reproduction, etc. Respiration is done in many small steps. Respiration is done in many small steps. It can be coupled with ATP formation. It can be coupled with ATP formation. Not all energy is released in single go to prevent heat loss. Respiratory substrate. Glucose is most favored respiratory substrate. But glucose is most favored respiratory substrate. But other molecules can also be used as respiratory substrates. Other molecules can also be used as respiratory substrates. Other molecules can also be used as respiratory substrates. Other molecules can also be used as respiratory substrate. Fat, protein, organic acid also be used as fat, protein, organic acid also be used as a substrate. Fat provide maximum energy liberate when substrate is fat. फैट का था 0.7 RQ 0.7 फैट का RQ क्या था 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 0.7 प्रोटीन का 0.9 ऑर्गेनिक एसिड लेस देन ऑर्गेनिक एसिड लेस देन 1 मोर देन ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1 ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1 ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन ऑर्गेनिक एसिड मोर देन 1 ऑर्गेनिक एसिड मोर देन 1 एग्जांपल मैलिक एसिड 1.33 ऑर्गेनिक एसिड मोर देन 1 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 मैलिक एसिड 1.33 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इक्वल्स टू 4 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 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 4 ऑर्गेनिक एसिड मोर देन 1 ऑर्गेनिक एसिड मोर देन 1 मैलिक एसिड 1.33 ऑक्सैलोएसिटिक 4 फैट का तो 0.7 फैट का 0.7 प्रोटीन का 0.9 ऑर्गेनिक एसिड मोर देन 1 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का क्या है 1.33 ऑक्सैलोएसिटिक मैलिक एसिड का 1.33 और मैलिक एसिड का 1.33 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 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का तो 4 है 4 फैट का 0.7 प्रोटीन का 0.9 ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1 मैलिक एसिड 1.33 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4
also be used. Process is called protein की breakdown में तो the process is called proplasmic indication of starvation 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 during respiration NADH and FADH2 are formed 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 when ETS में क्या बनता है एक respiration में क्या होता है during respiration NADH and FADH2 are formed during respiration NADH and FADH2 are formed ETS में एक NADH क्या देंगे 3 ATP एक FADH2 2 ATP माइटोकॉन्ड्रिया की introduction of glycolysis. Glucose is partially oxidized to two molecules of pyruvate. Glucose is partially oxidized to two molecules of pyruvate. Glucose is partially oxidized to two molecules of pyruvate. Glucose is partially oxidized to two molecules of pyruvate. Also called EMP pathway. Impedant Meyerhoff and Parnas. Also called EMP pathway, impedant Meyerhoff and Parnas. It is also called universal pathway. 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 Early atmosphere is reduction. Early atmosphere of Earth was reducing. Water, hydrogen, NH3, CH4. We have water, hydrogen, ammonia, methane. There was no free oxygen. So initial organisms were anaerobic. Early atmosphere of Earth was reducing. 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 We have water, hydrogen, ammonia, methane. There was no free oxygen. So initial organisms were anaerobic. Facultative anaerobes mycoplasma. Facultative anaerobes mycoplasma. Facultative anaerobes mycoplasma. Obligate anaerobe Clostridium. 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 Facultative anaerobes mycoplasma. Facultative anaerobes mycoplasma. Facultative anaerobes mycoplasma. Obligate anaerobes Clostridium. 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 Facultative anaerobes mycoplasma. Facultative anaerobes mycoplasma. Obligate anaerobes Clostridium. We call universal pathway because it does not require oxygen during glycolysis. Facultative anaerobes mycoplasma. 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 Obligate anaerobes Clostridium. 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 We call universal pathway because it do not require oxygen during glycolysis. We call universal pathway because it does not require oxygen during glycolysis.
We call universal pathway. We call universal pathway because it does not require oxygen during glycolysis. We call universal pathway. We call universal pathway because it does not require oxygen during glycolysis. We call universal pathway. We call universal pathway because it do not require oxygen. It do not require oxygen during glycolysis. It occurs in cytoplasm. 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 We call universal pathway because it do not require oxygen during glycolysis. It occurs in cytoplasm. Prokaryotes and eukaryote cells. Prokaryotes and eukaryote cells. Prokaryotes and eukaryote cells. Prokaryotes and eukaryote cells. Prokaryote and eukaryote cells. Prokaryotes and eukaryote cells. सुक्रोज इनवर्टेज सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज से इनवर्टेज लगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सुक्रोज है सुक्रोज होगा तो सुक्रोज में इनवर्टेज लगेगा सुक्रोज में इनवर्टेज लगेगा तो बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज इनवर्टेज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज से क्या बनेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज से क्या बनेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज से क्या बनेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सुक्रोज से क्या बनेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सुक्रोज से क्या बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1 से बिसफॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 1 ATP यूज हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमेराइजेशन होगा ठीक है and glucose 1 ATP glucose 1 ATP glucose 1 ATP glucose 6 phosphate glucose 6 phosphate fructose 6 phosphate fructose 8 phosphate 1 6 bisphosphate ATP fructose 1 6 phosphate 1 fructose 1 6 bisphosphate phosphoglyceraldehyde और कहते हैं डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 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 glucose 6 phosphate glucose 6 phosphate fructose 6 phosphate से fructose 1 से बिसफॉस्फेट तो दो बनेंगे
Yes, two. When the is possible is read one.
glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate, fructose 1,6-bisphosphate, fructose 1,6-bisphosphate, so phosphoglycerate, phosphoglyceraldehyde, dihydroxyacetone phosphate, फिर कीजिए phosphoglyceraldehyde ये तो बनता है aldehyde phosphoglyceraldehyde phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate, फिर phosphoenol pyruvate, ATP यहाँ से बना, 2 निकल गया, ATP यहाँ बना, फिर NADH2 यहाँ बना, ठीक है। glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate, फिर fructose 6-phosphate, glucose 6-phosphate लेगा, ATP लेके ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर fructose 6-phosphate से बनेगा fructose 1,6-bisphosphate, 6-bisphosphate, से बनेगा बिस्फॉस्फेट भी लेगा क्या, एक ATP लेके ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, fructose 1,6-bisphosphate से ठीक है बनेगा, fructose 1,6-bisphosphate हो गया, ये बन जाएगा phosphoglyceraldehyde, फिर dihydroxyacetone phosphate, ये तो मॉलिक्यूल पागल, फिर इससे क्या बनेगा 1,3-bisphosphoglycerate, फॉर्मेशन किसका करेगा NADH2 का, NAD प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ NADH2,
फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फिर पायरुवेट, यहाँ से तो वाटर निकलेगा, यहाँ से तो एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ यहाँ से वाटर। एनर्जी मैट्रिक्स फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर एक दो लॉस कितना हुआ 2 ATP, लॉस कितना हुआ 2 ATP, प्रॉफिट कितना हुआ 4 ATP, लॉस हुआ 2 ATP का, प्रॉफिट हुआ 4 ATP का, नेट गेन 2 ATP, टोटल गेन 8 ATPs, टोटल गेन 8 ATPs, टोटल गेन 8 ATPs फ्रॉम NADH। फेट ऑफ पायरुवेट ग्लूकोज से बन गया है टू पायरुवेटिक। एरोबिक तो होगा लिंक रिएक्शन, एरोबिक होगा इसका, अगर ऑक्सीडेशन होगा एरोबिक तो क्रेब साइकिल में लिंक रिएक्शन होगा, फिर क्रेब साइकिल होगा। एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन हो जाएगा, एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन हो जाएगा। फर्मेंटेशन 2 स्टेप में होगा, एक तो इथेनॉल बनेगा, एक तो लैक्टिक एसिड बनेगा। इथेनॉल फर्मेंटेशन पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज लगके, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एसिटल्डिहाइड प्लस CO2 बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड प्लस CO2 बन जाएगा। फिर एसिटल्डिहाइड का डिहाइड्रोजनेशन होगा, इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल कहाँ बनती है ईस्ट में, ईस्ट क्या है यूनिसेलुलर, तो इथेनॉल NADH2 से NAD प्लस बन जाता है। फर्मेंटेशन फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज लग के लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लैक्टिक एसिड क्या कर रहे मेकिंग बैक्टीरिया एनिमल मसल्स में भी बन जाता है जब जिम करते थे। तो NADH2 NAD एनाबॉलिक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये हो गया। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज और अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेशन। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एसिटल्डिहाइड प्लस CO2 निकलेगा, फिर अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज लगे इथेनॉल बन जाएगा। ठीक, फर्मेंटेशन में टोटल गेन 2 ATP ही है। लेस देन 7% एनर्जी स्टोर, more than 7% energy stored in glucose is released, less than 7% energy stored in glucose is released, less than 7% energy stored in glucose is released, less than 7% energy stored in glucose is released, less than 7% energy stored in glucose is released, less than 7% energy stored in glucose is released, less than 7% energy stored in glucose is released, less than 7% energy stored in glucose is released, less than 7% energy stored in glucose is released, less than 7% energy stored in glucose is released, less than 7% energy stored in glucose is released, less than 7% energy stored in glucose is released, less than 7% energy stored in glucose is released, less than 7% energy stored in glucose is released. Toxic producers are released. Toxic products are released. Lactic acid alcoholic है at 13% concentration yeast poisons itself at 13% concentration yeast poison itself. More alcohol formed by distillation, more alcohol बनाना है तो distillation से बनेगा. More alcohol are formed by distillation, more alcohol found by distillation. Incomplete oxidation NADH2 से fermentation slow बनता है. इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन NADH2 से NAD प्लस स्लो प्रोसेस. टोटल गेन एरोबिक में क्या होगा टोटल गेन 38 ATP, टोटल गेन 38 ATP, C6H12O6 प्लस 2 ये
कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, वाटर ये दोनों बनता है। NaDH2 से ATS में NAD बनता है, NaDH2 से ATS में NAD robust setup it gives ATP। Aerobic respiration, presence of oxygen, aerobic respiration, presence of oxygen, aerobic respiration, presence of respiration, aerobic is presence of oxygen, terminal electron acceptor or terminal hydrogen acceptor of ATS, terminal electron acceptor or terminal hydrogen acceptor of ATS, आधा ऑक्सीजन 2 ATP, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो H2O बना देगा। तो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, एक प्रोटॉन भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अब क्या होगा यहाँ पर लिंक रिएक्शन, तो टू पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम बनेगा, टू पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम प्लस CO2 बनेगा, टू पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम प्लस CO2 बनेगा। तो क्या पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस लगे, पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम प्लस CO2, एसिटाइल को एंजाइम प्लस CO2, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस बनेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस लगा, NAD से NADH2 बनेगा, NAD प्लस से NADH2 बनेगा, और मैग्नीशियम या NAD प्लस या कोएंजाइम TPP या लिपोइड लग जाएगा। Introduction of Krebs cycle, called Krebs cycle or tricarboxylic cycle, called Krebs cycle or tricarboxylic carbon TCA, called Krebs cycle or tricarboxylic cycle TCA or citric acid cycle, called Krebs cycle or tricarboxylic cycle, called Krebs cycle or tricarboxylic cycle TCA और citric acid cycle। फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है 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 सिट्रिक एसिड, फर्स्ट मेंबर क्या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फर्स्ट मेंबर क्या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फर्स्ट मेंबर क्या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फर्स्ट मेंबर्स क्या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फर्स्ट मेंबर 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 या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड इज ओनली 5 कार्बन मॉलिक्यूल इन Krebs cycle, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड इज ओनली 5 कार्बन मॉलिक्यूल इन Krebs cycle। से क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ और क्रिकेट कोच, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, citrate, isocitrate, alpha ketoglutarate acid, succinyl coenzyme, succinate, fumarate, malate, citrate, citric acid, क्रिकेट का सिट्रेट, सिसकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनेल कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसिटिक। सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, क्रिकेट कोच, नहीं सिट्रेट, एकोनिटेट,
isocitrate, isocitrate, citrate, cisaconidate, isocitrate, 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 alpha ketoglutarate, alpha ketoglutarate, succinyl coenzyme, succinyl coenzyme, succinate, succinate, fumarate, cricket coach of India, cricket coach of India appointed smart staff for mandate office. ठीक है ठीक है क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया यहाँ से बनेगा NADH2 NAD प्लस से NAD प्लस से यहाँ पर CO2 भी निकलेगा CO2 तो वाले को सर्टिफिकेट NADH2 और प्लस क्या है CO2। यहाँ सक्सेनल बन जाए से यहाँ पे डायरेक्ट GTP बन जाएगा, GTP से GTP, TP फ्यूमरेट से यहाँ फिर भी FADH2 FADH2 FADH से FADH2 मैलेट से भी के बाद में NADH2 बन जाएगा। कंटिन्यू है ना, फिर मैलेट एक छोड़ के NADH2 बन जाएगा। ठीक है, citrate से sacconitate, isocitrate से sacconitate, isocitrate से sacconitate, isocitrate, alpha ketoglutarate, succinyl coenzyme, succinate, fumarate, malate, oxaloacetic acid। Sacconitate, isocitrate, alpha ketoglutarate, alpha ketoglutarate, succinyl
coenzyme succinate के बाद fumarate malate ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये बन जाएगा इसके साथ। तो ये सिट्रेट सिसाकोनिट्रेट आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट सक्सिनेट कोएंजाइम सक्सिनेट फ्यूमरेट मैलेट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड तो यहाँ से आइसोसिट्रेट से NaDH2 भी बनेगा, CO2 भी निकलेगा, है ना। फिर यहाँ से भी NaDH2 DH2 और क्या बनेगा CO2। यहाँ पे तो GTP से GTP बन जाएगा। फिर यहाँ से बनेगा फ्यूमरेट से पहले FADH2 फिर DH2 FAD प्लस से FADH से मैलेट छोड़िए। फिर यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के पहले NAD से बन जाएगा NaDH2। तो एक पायरुवेट से 3 NaDH2 3 NaDH2 एक FADH2 एक GTP बना और 2 CO2 रिलीज हुए। सिट्रेट सिस्टाकोनिट्रेट आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट सक्सिनिल कोएंजाइम सक्सिनेट फ्यूमरेट मैलेट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जैसे NaDH2 CO2 CO2 फिर सक्सिनल कोएंजाइम से भी GTP FADH2 NaDH2 वेव साइकिल से दो NaDH2 वेव साइकिल से 2 NaDH2 वेव साइकिल से 2 NaDH2 वेव साइकिल 6 NaDH2 2 FADH2 ये 2 ATP है, 38 ATP बनेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम out of 38 ATP we have got only 4 ATP till now. Out of 38 ATPs we have got only 4 ATPs till now. Mitochondrial matrix has 10 NADH. 10 NADH2 6 इसमें के 2 ग्लाइकोलिसिस के 10 10 NADH2 माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है 10 NADH2 2 FADH2 2 FADH2 which need to be used to make ATP. Inner membrane of mitochondria is the site of electron transport system. Inner membrane of mitochondria is the site of electron transport system. Inner membrane of mitochondria is the site of electron transport
transport system. Inner membrane of mitochondria is the site of electron transport system. It has 5 complex first NADH dehydrogenase complex for NADH dehydrogenase complex complex first NADH dehydrogenase complex second FADH2 is succinate dehydrogenase complex complex second है FADH2 succinate dehydrogenase complex second cytochrome BC1 complex cytochrome BC1 complex fourth क्या cytochrome C oxidase cytochrome AA3 complex fourth क्या है cytochrome C oxidase cytochrome AA3 कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या है NADH2 कॉम्प्लेक्स NADH2 कॉम्प्लेक्स NADH DH complex NADH2 itu kali NADH dehydrogenase complex NADH पहला क्या है
First NADH dehydrogenase complex, NADH dehydrogenase complex, NADH dehydrogenase complex. Second FADH2 succinate dehydrogenase complex. First NADH dehydrogenase complex. Second FADH2 succinate dehydrogenase complex. Third है cytochrome BC1 complex, cytochrome BC1
flavin adenine complex third, cytochrome BC1, cytochrome BC1 complex, cytochrome BC1 complex, cytochrome BC1 तो क्या बनेगा cytochrome B FeS, here cytochrome C1 is, फिर फोर्थ कॉम्प्लेक्स क्या cytochrome C oxidase, cytochrome C oxidase या cytochrome AA3 कॉम्प्लेक्स, cytochrome AA3 कॉम्प्लेक्स, cytochrome AA3 कॉम्प्लेक्स तो क्या बनेगा कॉपर A cytochrome A3 कॉपर B, फिर फिफ्थ है ATP सिंथेस में क्या F0 F1, तो यहाँ से फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से FeS से यूनिक्विनॉल से यूनिक्विनॉल कॉम्प्लेक्स थर्ड आएगा, पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फिर थर्ड फिर सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड कॉम्प्लेक्स सबसे पहले थर्ड कॉम्प्लेक्स फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ फिफ्थ, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से जाएगा FeS से यूनिक्विनॉल से यूनिक्विनॉल, साइटोक्रोम B FeS साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम कहाँ प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे साइटोक्रोम प्रेजेंट है, ये ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास, तो फोर्थ से भी सेकंड से इलेक्ट्रॉन जाएगा FeS यूनिक्विनॉल के पास साइटोक्रोम BC और कॉम्प्लेक्स फोर्थ है कॉपर A साइटोक्रोम में। सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम क्या है BC1CCSA3, respiratory balance sheet. We took certain assumptions to calculate ATP we took certain assumptions to calculate ATP yield of one glucose molecule. We took certain assumptions to calculate ATP yielding of one glucose molecule. Only glucose is used as a respiratory pathway. No, only glucose is used as a respiratory pathway. And protein, fat, organic acid can also be respiratory pathway. Protein, fat, organic acid can also be respiratory pathway. All the pathway shall be sequence only. No fermentation can also occur after fermentation can also be occur after glycolysis. No intermediate will leave the respiratory pathway. No intermediate will leave the respiratory pathway. Acetyl coenzyme may make amino acid fatty acid. NADH and FADH2 are only go to ETS. NADH2 and FADH2 will only go to ETS. No, in fermentation NAD plus is regenerated without ETS. Amphibolic pathway dual anabolic catabolic with fat कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लिसरॉल थे फॉस्फेट या पायरुवेट बन गया और पायरुवेट से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम से सिट्रेट अल्फा ब्यूटोक्लोराइड सक्सिनेट कोएंजाइम ऑक्सोलाइसिस बन जाएगा। तो फैट से फैटी एसिड फैट टूटता है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलकर कुछ बना सकता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट, तो प्रोटीन अमीनो एसिड से बनेगा तो इससे कुछ बना सकता है। रेस्पिरेटरी कोशिएंट ऐसे तो CH2O6 plus 6O2 molecule gives 6CO2 plus 6H2O plus ATP. So here 6 ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहे हैं और 6 ऑक्सीजन रिवॉल्व हो, तो RQ वैल्यू निकालने के लिए CO2 इवॉल्व, तो इतना CO2 निकलता है CO2 इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन यूटिलाइज, CO2 इवॉल्व अपॉन O2 यूटिलाइज, या फिर इसे कहते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। तो कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, इसको यूनिटी कहते हैं, यूनिटी मतलब कार्बोहाइड्रेट 1,
फैट को ट्राईपार्मेटिक एसिड भी कहते हैं, ट्राईपार्मेटिक एसिड भी कहते हैं, ट्राईपार्मेटिक एसिड भी कहते हैं। कार्बन कार्बन 51, कार्बन 51, नाइट्रोजन 98, कार्बन 51, नाइट्रोजन 98, कार्बन 51, कार्बन 51, नाइट्रोजन 98, ऑक्सीजन 6, तो 102 अपॉन 145 तो 0.7। फैट का अर्थ क्या होता है 0.7, फैट का ऑक्सीजन 0.7, प्रोटीन का 0.9, ऑर्गेनिक एसिड का लेस देन 1, 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 ऑर्गेनिक एसिड मैलिक एसिड 1.33, ऑक्सीजन एसिड 4। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का क्या होता है इन्फिनिटी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का क्या होता है इन्फिनिटी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का इन्फिनिटी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का इन्फिनिटी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का इन्फिनिटी। ATP is known as energy currency of all cells because it stores energy in its phosphate bond. It releases energy by breaking its phosphate bond whenever required and get converted into ATP. C. Second, respiratory substrate are the organic substrate which are oxidized during respiration to liberate energy. First, instantaneous source of energy is fat. Instantaneous source of energy is fat. Produce energy which can be detected in the form of the respiration in germinating seeds, in the respiration in germinating seed, 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 the respiration in germinating seed,
without respiratory organ. Plant can get along without respiratory organ because each plant part takes care of its own gas exchange needs. Plants do not have great demand of gas exchange. Each living plant cell is located quite close to the surface of plant. Great demand of exchange. Each living plant cell is quite close to the surface of plant. 7. Aerobic glycolysis. The pathway of respiration. The pathway of respiration common all living organisms is EMP. EMP pathway, it occurs in the cytoplasm, and the product formed are two molecules of pyruvic acid. B. Select the wrong statement with respect to glycolysis. It occurs outside mitochondria. 11. It occurs outside mitochondria. It is an anaerobic phase. Glucose undergoes partially oxidation to form two molecules of pyruvic acid. This is phosphorylated to glucose 6-phosphate by isomerase enzyme. Glucose is phosphorylated to glucose 6-phosphate by isomerase enzyme. It's anaerobic phase. Stating the given statement and bracket. Fructose 6-phosphate तो यहाँ से ग्लूकोज 6-phosphate आ रहा है. ग्लूकोज 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate, bisphosphate, 3-phosphate, 3-phosphate, तो 2-phosphate. All enzymes invertase is significant for glycolysis as it invertase degrades starch into glucose. Which of the following are isomerase? Which of the following isomerase? Hydroxyacetone phosphate. B. Which of the following setups during glycolysis is associated with utilization of ATP? Which of the following steps during glycolysis is associated with utilization of ATP? Fructose 6-phosphate से fructose 1,6-bisphosphate. B. Which of the following conversion involve ATP synthesis during glycolysis? Which of the ATP synthesis? 1,3-bisphosphate. C. Evolve. At the end of glycolysis, S is the net energy gain from one molecule of glucose. Net energy gain, net to ATPs. Why? But oxidative phosphorylation. But there is also energy stored in the form of NADH2. DS2 B. 16.
The net gain of ATP molecules in glycolysis during aerobic respiration. Aerobic. The net gain of ATP molecules. The net gain of ATP molecules in glycolysis. Glycolysis तो दो वो और दो वो. The net gain of ATP molecules in glycolysis during aerobic respiration. एरोबिक तो दो ATP हो, दो NADH2 से बनेंगे 6 6 2 8 8D 17. The end product of glycolysis. The end product of glycolysis, pyruvic acid. What is true about the end product of glycolysis? 2 pyruvic acid, 2 ATP, 2 NADPH2. 17. Glycolysis occur in cytoplasm where carbon get oxidized and glucose get oxidized. Fats made of 3 fatty acid. Fats made of 3 fatty acid chain attached to glycerol. फिर glycolysis metabolites made from glycerol. Storage form of glucose. Storage form of glycerol. Glucose. Storage form of glucose. Storage form of glucose क्या है? Storage form of glucose देगा D का 4th है, D का 4th, तो फॉर्मूले का तो फर्स्ट हो जाएगा ना, फर्स्ट D ऑप्शन करेक्ट. 21. Ethyl alcohol fermentation occur. Ethyl alcohol fermentation occur in. Ethyl alcohol fermentation. Ethyl alcohol fermentation तो कहाँ जाती है? ईस्ट में. Anaerobic respiration take place in cytoplasm. Which of the following is the product? 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 Which of the following? Which of the following? Which of the following is the product of the formation of glucose waste? Which of the following is the product of ethanol? B. Glucose waste. A test tube containing sugar solution and yeast is kept in a warm place overnight. The gas collected from this mixture is to flame when turn lime water when they extinguish the flame. A test tube containing sugar CO2 nucleus turn lime water into Which of the following option does not hold true regarding anaerobic respiration or fermentation? Which of the following option doesn't? Oh, लाइट चली गई.
Glucose of skeletal muscles. Glucose of skeletal muscle fibers is broken down to release and lactic acid and energy. Lactic acid, if accumulates, causes muscle fatigue. First option is correct. Identify A, B, and C in the given reaction of lactic acid fermentation and select the correct option. Pyruvic acid plus A. Pyruvic acid plus lactate dehydrogenase. Lactic acid, lactate dehydrogenase. NaL. Pyruvic acid plus NADH. Lactic acid plus B lactic acid NAD plus. B option is correct. So the incorrectly matched pair. End product of alcoholic fermentation. End product of alcoholic fermentation. End product of alcoholic fermentation. Ethanol plus CO2. End product alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation ethanol plus CO2. Uh, 30 का हो गया फर्स्ट. लाइट चली गई. आज fermentation is represented by the equation. Fermentation represented by the equation. B option. Pyruvic acid is reduced to lactic acid anaerobically in pyruvic acid is reduced to lactic acid anaerobically muscles में. Which of the following describes significance of fermentation? Which of the following describes significance of fermentation? Significance of fermentation. Significance of fermentation. Production of alcohol in brewery industry, making of drug in making industry, production of vinegar by acetic acid bacteria. Duck kept overnight in warm earth become soft and spongy due to absorption of CO2 from atmosphere. Site of Krebs cycle in mitochondria is Krebs cycle matrix. Glycolysis occur in mitochondria while Krebs cycle occur in cristae of mitochondria. Krebs cycle, both the statements are wrong. D option. Fate of pyruvic acid during anaerobic respiration. Fate of pyruvic acid during aerobic respiration. Oxidative phosphorylation. D option. Pyruvate dehydrogenase is used in converting. Pyruvate dehydrogenase is used to converting. Pyruvate dehydrogenase. Pyruvic acid to acetyl coenzyme. Acetyl coenzyme. C. 49,
39, 38 अच्छा ये है. Rate of pyruvic acid during aerobic respiration is oxidative D. 35, 36 मैंने किया ना. 36 का 37 का D. 38 का फिर 38 का भी D. 39 का था C. 39 का C. 40 will be given acetyl coenzyme वाटर निकलता है क्या? निकलता हुआ यार लाइट. 41 which step is called gateway step link reaction in aerobic respiration? Which step is called gateway step link reaction in aerobic? Formation of acetyl coenzyme A. TCA cycle is named so because it begins with condensation of oxaloacetic acid as dicarboxylic acid, the first product of citric acid containing 3 carboxylic group. Krebs cycle starts with the formation of a 6-carbon compound by reaction between. Krebs cycle starts with the formation of 6-carbon compound by reaction between oxaloacetic acid with acetyl coenzyme. ये 2 कार्बन का है, 4 2 4 6 B. 43 हो गया. 44. In Krebs cycle, oxaloacetic acid accepts acetyl coenzyme to form citric acid. Which of the following is a 4-carbon compound? Which of the following is a 4-carbon compound? Identify XYZ in the given diagram representing step of citric acid and acetic acid cycle and select the correct option. हर शंभू 46 NADH2 FADH2 NADH2 FADH2. C option is correct. Acetyl what? Synthesis acetyl coenzyme of the citric acid. All of these. Delete. Identify enzyme A in the given reaction of Krebs cycle. Citrate synthase. The intermediate product between alpha-ketoglutarate acid and succinic acid.
in TCA cycle is succinyl coenzyme. Select the correct sequence of formation of given intermediate of succinate, malate of the citrate of the succinate. C. Substrate level phosphorus occur during which step of Krebs cycle? अल्फा क्यूटर वो बनता है तो अल्फा सक्सिनल कोएंजाइम से सक्सिनल कोएंजाइम से सक्सिनेट एसिड तब एसिड The first 5-carbon decarboxylic acid in Krebs are a 5-carbon with alpha beta volate. Which of the following step is associated with ATP formation substrate level of phosphorylation? Succinyl coenzyme से succinic acid है क्या? Which of the following step is associated with ATP formation? Succinyl coenzyme से all of these. FAD participate in Krebs cycle as electron acceptor in between conversion of fumarate. FAD participate in Krebs cycle. Succinate acid to malic acid. C होना चाहिए इसके लिए तो 55. Select the correct statement. Select the correct statement. When ATP is synthesized directly from metabolites it is substrate level phosphorylation. In Krebs cycle, citrate undergoes 2 decarboxylation and 4 dehydrogenation. Citric acid is a 6-carbon compound. All of these. 56. All enzymes. 56. All enzymes of TCA cycle are located in the mitochondrial matrix except one, which is located in inner mitochondrial membrane in eukaryote and in cytosol in prokaryote. This enzyme is categorize the given equation under respective phases. So the correct option. First step glycolysis. When
when two molecules of acetylcholine enter the TCA cycle, net gain at when two molecules of acetylcholine enter the radiation. Identify the three components, first, second, and third of ATP molecules shown in given figures. Adenine, this one is adenine. Electron transport chain is located in inner membrane of mitochondria and chloroplast, both PTSP. Electron transport chain is located in electron are passed on to CVT that result in the formation.
accept all the following processes can reduce you to accept all of the following processes can reduce you to accept the minimum alcohol sexually has an activity perspiration. Select the option that correctly fills the blanks in the following statement. Glucose has 6 carbon atoms. Uric acid has 4 paracetamol can have 38